हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट हाइड्रोस्फीयर। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट वाटर एंड व्हाट वी कैन सी लाइक ओशंस, टाइड्स एंड ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो जैसे कि हाइड्रोस्फीयर का बेसिक मतलब होता है कि जो भी हम लोग ओशंस वगैरह देखते हैं लैंड सरफेस पे। नाउ वी ऑल नो दैट अगर हम लोग स्फीयर्स के बारे में बात करें तो बायोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, राइट। तो यही सब जो है वो यहाँ पे लाइफ को पॉसिबल बनाता है अर्थ पे। एंड हाइड्रोस्फीयर इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग ओशंस के बारे में, टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और ओशन करंट्स के बारे में। ठीक है, तो ओशंस पे आते हैं। द ओशन कंप्राइजिंग मोर देन 70% और 140 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ द अर्थ सर्फेस ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ग्लोब। सो वी नो दैट जो अर्थ का सरफेस है उसमें 3 पार्ट्स इज सराउंडेड बाय वाटर। सो ऑलमोस्ट 70% और 140 मिलियन स्क्वायर माइल्स इज कवर्ड बाय वाटर ओनली. And the regular movements we see in this kind of water is basically horizontal and vertical. Horizontal movement is the सरफेस लेवल मूवमेंट इन द ओशंस। लाइक अगर हम लोग ओशन करेंट्स के बारे में बात करें तो वो ओशन करेंट्स जो कि हॉरिजॉन्टली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं, सब दैट इज़ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. एंड सपोज इफ़ द वाटर suppose the in like colder regions, maybe you have read it in chemistry also, that जब लाइक ठंडे जगहों पर जहाँ पे ऊपर का पानी ठंडा हो जाता है फिर वो नीचे आके बैठ जाता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर जो नीचे का पानी है वो ऊपर जाता है. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, राइट. एंड दैट इज़ हाउ फिशेस आर स्टिल अलाइव इन दोज रीजन्स इवन आफ्टर so much of minus temperature. So why it is happening? So what we know, the animal is expansion of water, right? So I'm not getting into chemistry as we are studying geography, right? So but what I want to say from this is that kind of movement of water from the top to the bottom due to temperature, salinity is the vertical movement, or the rising of the bottom water and the sinking of the surface water is known as the vertical movement of the ocean surface. Now the movement can be because of different regions, maybe because of density, maybe because of winds. Now when we talk about tides are basically the alternate rise and fall of the surface ocean water twice in about 24 hours. So we know that tides are a common occurrence near seashores area, and throughout the oceans actually tides are very prominent. So we see the alternate rise and fall of the water surface throughout, and basically for in 24 hours twice this same pattern the ocean follows. That is the pattern of high tides and low tides. We are going to study about that further in this chapter only. So we know that it is a regular rhythmic motion resulting from the gravitational attraction exerted upon the earth by the sun and the moon. So the gravitational force which is exerted by the sun and the moon, we can see such kind of alternate rise and fall of the water surface. Okay, like if you have ever visited any place near any seashore, you would have observed it. Now formation of tides. So how the tides are formed? Now tides are caused by the gravitational pull of moon and to some extent by the pull of the sun, which is very far from the earth. So we know the basic structure of sun, moon. Okay, सो क्या होता है कि जैसे कि अर्थ तो रेगुलर रोटेशन कर रहा है और रेवोल्यूशन कर रहा है, तो जो सन है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अर्थ पे उसको अपने तरफ खींचने के लिए. एंड सिमिलर लाइक मून. ठीक है, तो जो सन होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रहा है, बट वो उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. और जो मून है वो कंपैरेटिवली कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, बट उसका डिस्टेंस कम है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है. इसी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल मून लगाता है उसकी वजह से, क्योंकि वो अर्थ को तो अपने तरफ नहीं अट्रैक्ट कर सकता, बट डेफिनेटली the water surface changes due to that gravitational force because it is getting attracted towards the moon. Basically we can say due to the gravity. Now the moon through
The moon, though small, is very near the earth and exerts a strong gravitational pull on the earth as the moon rises later each day by about 50 minutes than the day before. High tide occurs later each day. So, like in the morning, we see that in some places there is like low tides happening, and in some areas there is high tide. Okay, so basically, जो moon है that is very small now and it is very near to the earth. Okay, so it exerts a very strong gravitational force on the earth, and as the moon rises around 50 minutes before the actual sunlight enters the earth, high tides actually starts occurring later each day and not early morning. Naturally, the water of the earth nearest to the moon will be pulled by the moon's gravitational force. Means naturally we see that mainly the water which is present closer to the moon's surface is more attracted by the gravitational force than the water which is not very near to the moon's surface. The moon is directly overhead with the result that the water piles up together, causing the ordinary high tide there. That means moon is directly overhead, so definitely it results in the water being more attracted due to the gravitational. That is, ये सारा बेसिक चीज़ है कि किस तरीके से मून जो है वो फोर्स अप्लाई करता है एंड खींचता है. नाउ दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर वी कैन सी means basically the gravitational pull of the sun and the moon is causing the tide to occur in these directions. Like यहाँ पे देखो ये पूरा अर्थ है तो इधर से मून का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है और इधर से लग रहा है, तो जो वाटर है वो इन डायरेक्शंस में ऊपर हो जा रहा है. और ये जो टाइड होता है इस टाइप के टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं. अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो टाइड्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक स्प्रिंग टाइड और एक नीप टाइड्स. तो स्प्रिंग टाइड्स तब जब ये 180 डिग्री पे होगा और नीप टाइड्स तब जब ये 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, ये तीनों मिलके. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे. तो देखो हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक बात कर लेते हैं पैटर्न्स ऑफ द टाइड के बारे में. तो बेसिकली जो पैटर्न है ये ऐसा है कि ये 12 आवर्स 26 मिनट्स में ईच डे रिपीट होता है, ऑब्वियसली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल force of the moon. And हम लोग we can observe very high tides during the Amavasya or Purnima days, because in those days we basically the moon and the earth is in such a pattern that it applies more force on the water surface of the earth. Now, why high tide changes its timing every day? So we see that there is no pattern or a systematic manner, systematic time where the tides occur. It is actually happening in a pattern. Like suppose आज जो है वो tide हुआ 7 बजे, देन कल मतलब कल नहीं एक्चुअली 12 आवर्स 26 मिनट्स के बाद वापस से उस रीजन में हाई टाइड्स होगा. दैट मीन्स अगर आज 7 बजे शाम को हाई टाइड हुआ एक प्लेस पे, तो फिर कल सुबह 7:26 पे दोबारा से हाई टाइड होगा एंड देन उस 7:26 पे 12 आवर्स 26 मिनट्स ऐड हो जाएगा. तो इस तरीके से जो टाइमिंग है वो चेंज होता रहता है. जैसे कि फिर 7:26 में जब 12 आवर्स 26 मिनट्स ऐड करेंगे तो वो 7:52 हो जाएगा. तो जो कल यस्टरडे जो मतलब इनिशियली वो 7 बजे हुआ और आज फिर से शाम में वो 7:52 पे होगा. तो 52 मिनट्स का डिफरेंस एक दिन में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल गया. ठीक है, इसके बाद एम्पलीट्यूड और रेंज ऑफ टाइड्स. सो बेसिकली वी सी दैट जो ओपन सीज होता है वहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी कम होता है. मतलब हाई टाइड्स और लो टाइड्स के टाइम पे दोनों ही वहाँ पे हाई रहते हैं. तो हाई टाइड्स जो है वो कंपैरेटिवली कम ही देखने को मिलता है देन द शोर रीजन्स. यानी कि जो वाटर का जो लेवल है वो ज़्यादा शोर रीजन्स में ऊपर चला जा सकता है, लेकिन जो ओशन रीजन्स होता है वहाँ पे कंपैरेटिवली कम ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है अर्थ सरफेस के थ्रू वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द शोर्स. इसी वजह से वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा नहीं राइज़ कर पाता है, लेकिन जो शोर्स रीजन में है वहाँ पे काफ़ी ऊंचा चला जाता है. मतलब जो हाईएस्ट जो देखा गया है वो अराउंड 12 मीटर तक का देखा गया है, और ये काफ़ी एडवांटेजेस होता है टू द शिपिंग. ठीक है, क्योंकि शिप्स को काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं देना पड़ता है. इट्स वेरी ईजी टू actually transport the ship when the tides are high enough to pull or push the ships to the shores.
ठीक है, बट समटाइम्स दीज टाइड्स, हाई टाइड्स आर इवन डेंजरस. सो बेसिकली यही कुछ थोड़ा बहुत बात है अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स. एंड देन कम्स द स्प्रिंग टाइड्स एंड द नीप टाइड्स. So we can understand that from this diagram only, that this is a kind of tide where we can see that जो सन, अर्थ और मून है वो 180 डिग्री पे है, और यहाँ जो सन, मून और अर्थ है वो 90 डिग्री पे है. ठीक है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो सन है वो इन दो, और मून जो है वो इन दोनों डायरेक्शन पे वाटर सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है. जबकि इस सिचुएशन में जो सन है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है और मून इस डायरेक्शन में लगा रहा है. तो जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में था. एक अगर वेस्ट के साइड से लगा रहा है तो एक ईस्ट के साइड से लगाएगा. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट नहीं है. ठीक है, वो ऑलमोस्ट साथ साथ में ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है कि एक नॉर्थ के डायरेक्शन से लगाएगा तो एक ईस्ट के डायरेक्शन से लगाएगा. तो होता क्या है ऐसे सिचुएशंस में कि जो जैसे कि जो नॉर्मल जो टाइड्स देखने को मिलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स, उसमें हाई टाइड्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और लो टाइड्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं. क्योंकि इस साइड पे जो हाई टाइड्स है ये बहुत ज़्यादा हाई है और इस साइड पे जो लो टाइड्स है ये बहुत ज़्यादा कम है. क्यों? क्योंकि जितना वाटर का वॉल्यूम है वो मेनली इन दोनों साइड्स पे चला गया है. तो इन दोनों साइड्स पे हम लोग को काफ़ी लो टाइड्स देखने को मिलेगा. बट इस सिचुएशन में हाई टाइड्स और लो टाइड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है हर डायरेक्शन से ही सेम फोर्स लग रहा होता है. तो यहाँ पे जैसे कि हाई टाइड बनेगा, यहाँ पे हाई टाइड बनेगा, यहाँ पे अगर हाई टाइड बना तो कंपैरेटिवली यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिलेगा. तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा हाई टाइड और लो टाइड में. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, एंड इसके बाद आप स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो जो भी यहाँ पे दिया गया है कि नीप टाइड्स किसको बोलते हैं, डेफिनेशन, और वो कब कब होता है. Tides, so basically due to the movement of the debris to the sea, tides help destroy the coastline and also help form cracks and inlands. So the tides are very useful in making some sort of landforms, and then like it takes along a lot of silt and a lot of debris from the coastlines, so it do not allow the formation of deltas as well. Okay, but then eventually when we see that there are deltas formed by the river but not near the coastal areas. Why? Because tides do not let the formation of deltas be possible. Then like for the tides, the famous estuaries of the rivers, so several estuaries of the rivers are also made because of all these kind of tides. Now you can see the names: Thames, Mersey, Elbe, would be more creeks. Okay, and then the harbors are also kept clean, like all the sort of estuaries, all the sort of harbors are kept clean by the tides, who just wash away that almost every day and deposit all those sort of dust far away into the sea. In cold countries, the like salt present in the sea water and all those actually helps to reduce the temperature by melting down the ice formed over there or near the region. Okay, so in cold countries the tides are also very helpful because of the salinity of water. Then low-lying areas along the sea coast, they are also shaped because of the high tides, and this water is also trapped by the manufacturing salt and is helped. I mean, this water is very useful in making all those kind of salts after it is trapped. Okay, so even in the formation of tidal energy or any sort of energy made from the tides of the water or maybe from the kinetic energy of the water, tides are very efficient in all those things. Now you can see all the other effects of tides and you can read it. Now comes the ocean currents. So basically देखो ocean current क्या होता है कि throughout the ocean there are several streams of water flowing here and there. Now due to several factors, there are certain streams of water which flows in a pattern near a country or maybe inside the coastlines or near the coastlines or maybe inside the sea or ocean.
So those continuously flowing streams of water is known as ocean currents. So a regular movement of water from one part of the ocean to another is called ocean current. Now what are the causes for the ocean currents? Now number one is the prevailing wind. Now obviously हवा आएगा तो वो वाटर को थोड़ा बहुत शिफ्ट तो करेगा, तो वो अगर एक रेगुलर पैटर्न में, जैसे कि साउथ विंड्स हो गया, ठीक है, या फिर साउथ ईस्ट विंड्स या ट्रेड विंड्स जो बहता है फ्रॉम द इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये जो विंड्स हैं ये एक पैटर्न में फ़्लो करती हैं और एक सीज़न पे फ़्लो करती हैं। तो ये जो विंड्स हैं ये ओशन स्ट्रीम को डेफिनेटली उसी पैटर्न में ब्लो करने में हेल्प करती है, देन दिस एंटायर सर्कुलेशन कीप्स ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन इन द एंटायर ओशन. So you can say that this is one of the cause for the ocean currents, that is the continuous movement or the regular movement of the surface water of the ocean. ठीक है. Second is variation in sea water temperature. So definitely if there is a variation, suppose a water in the ocean which is present near the equator is much warmer than the water which is present near the poles. So definitely the temperature difference will cause the hotter water, that is water from the equator, to flow towards the poles and water from the pole to flow towards the equator, just to attain an equilibrium, as you have learned in physics. So that is also one of the reasons why this ocean currents take place continuously from the colder regions of the water to the hotter regions, and the point or the region where these both cold and hot water meet is a place which is economically very beneficial because of the huge production of plankton, a kind of fish which is eaten by larger fish. So it's very helpful for the people who are living near those areas to catch fish and then sell it for economic purposes. Now let us come to rotation of the earth and Coriolis force. So I think you have learned about Coriolis force, that is basically due to the rotation of the earth there is a shifting, or basically there is a clockwise rotation of the water and as well as the wind towards, like in the clockwise direction or towards the right in the northern hemisphere, and in the anti-clockwise or towards the left in the southern hemisphere. This movement of winds and water in the anti-clock and clockwise is known as Coriolis force due to the rotation of the earth. So this is also one of the very important reason why the water of the northern and southern hemisphere flow in a certain direction, and that is also one of the cause of the ocean currents. Now comes the figuration of the coastlines. So the reaction of the currents is also altered by the shape of the landmass. Example, much of the south equatorial current is deflected into the northern hemisphere. That means the reaction of the current, that is also altered in a large way by the land masses also, because even the land masses, basically suppose a water stream is flowing but suddenly the place is landlocked, or the place suddenly or the water suddenly faced a land mass out there, so definitely it will change its position towards another direction. So that is also one of the reasons. So that is the figuration of the coastline, that is whenever there is any coastline, definitely there is a deflection or change in the direction of the water or the ocean currents, and that is what we can say as gyre pattern, which is basically that when ocean or water in the ocean is being deflected by all the land masses, basically they are blocked, the water are blocked by the continuous flow, the waters are blocked by the land masses, and that deflects its original direction, that we can say as the gyre pattern. Gyre basically comes from the word gyros, that is cycle. So a continuous cyclic process continues in the ocean throughout the year. This movement or this pattern is known as gyre pattern.
Then comes salinity. Now definitely this water present in the Atlantic Ocean, because suppose the Mediterranean Sea have a large amount of salinity in comparison to the Atlantic Ocean. So the water moves from the Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea, towards the Mediterranean Sea. Okay, and then there are several other examples where this kind of similar pattern is followed due to the difference in salinity, that is in the South Sea as between the Indian Ocean and the Red Sea via bubble madrib. Okay, so basically all these things you can see दैट सैलिनिटी हो गया, या फिगुरेशन ऑफ द कोस्ट लाइन हो गया, गायर पैटर्न हो गया, कॉरियोलिस फोर्स हो गया, प्रिवेलिंग विंड्स हो गया, ठीक है, और जो भी टेम्परेचर में डिफरेंसेस हो गए, ये सारा रीजंस है कि क्यों ओशन करंट्स होता है. सो लाइक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं अबाउट हाइड्रोस्फीयर, ओशन, टाइड्स, how tides are formed, how like there's a pattern of tides continuously flowing from the, like there's a difference between the high tides, the low tides, why are they happening, what is the impact of the gravitational pull of the sun and the moon on the earth's surface. So all these kind of things. Then the amplitude or range of tides, how it differs from the shallow regions and in the open oceans. And like what are the two types of tides, spring tides and neap tides, how it happens, what are the effects of tides, what is ocean currents, and how, why, like what are the causes for the ocean currents, that we all read in this particular part of the video. Now in the second part we will learn about the currents of the Atlantic Ocean, Pacific Ocean and all those kind of things related to that. Okay, so thank you for this video. We will meet in the next video. Till then, bye. Subscribe to my channel, hit the like button. Thank you.